first G20 Trade and Investment Working Group Meeting, Day 3, press conference by the Union Minister Piyush Goyal on the outcomes to uplift the trade and investment globally by addressing the issues of trade, sustainable growth, resilient supply chain, integrating MSME in global trade, and of course the major step to digitalize the public infrastructure with the immediate need to work on WTO reforms so that the developed and the developing countries go hand in hand to address the bigger challenges of the international trade market. So with this, we will take you directly to the press conference. Thank you very much, friends. Through all of you, I would like to convey my greetings to the people of Mumbai, Maharashtra, and across the country on this very auspicious occasion of Ram Navami. India is the president of the G20 this year. As we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, it's truly remarkable how the whole world is looking up to India's leadership, looking up to Prime Minister Narendra Modi, playing an important role in the world in terms of strengthening the economy of the world and also championing the cause of developing nations and less developed countries, particularly from the global south. The G20 with the motto Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, truly reflects India's ethos and the vision of the Prime Minister, one earth, one family and one future, helps set the tone of the various working group meetings of the G20. We have had our first meeting of the Trade and Investment Working Group in the financial and commercial capital of India, Mumbai, since 28th of March. It's a 3-day gathering of officials from all the member countries of G20, all the guests and invited countries, and the multilateral organizations like UNCTAD, WTO, IMF, and all the various multilateral organizations who have got together amidst very gloomy geopolitical and uncertain global economic environment where international trade has slowed down, inflation is high, interest rates are going up, world economies are getting into recession, developed economies particularly are in the throes of high inflation, low growth, job losses. Many developing nations are facing foreign exchange crisis. Amidst all these challenges, India is the bright spot which almost everybody in the world today recognizes and respects. The Trade and Investment Working Group meeting is addressing the challenges on 5 key priority areas. They are focused on trade, they are focused on sustainability, they are looking at areas around resilient supply chains, they are looking at the area of inclusive growth, and they are looking at sustaining growth in the years to come so that we can have more stable economies going forward. We will have 5 meetings. The first is in Mumbai, as I said. Over 100 delegates from all the G20 countries and the 8 invited countries, 10 regional and multilateral organizations have assembled in Mumbai. On the 28th, we had an international conference on trade finance with 2 panel discussions on the way forward on how trade finance will bridge the gaps that the world faces today. On the 29th, yesterday, trade for growth and prosperity was discussed. Trade and resilient supply chains, global value chains were discussed over 2 sessions. And addressing economic shock in supply chain, where many supply chains have got disrupted, were discussed with all the member countries. From the सर जब हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं और रेजिलिएंट एंड जो सप्लाई चेन की बात करते हैं, इसमें सॉल्यूशंस आप बता रहे हैं कि डिस्कस हुए हैं. आगे जाकर के उन सॉल्यूशंस का भारत की ओर से इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या रहेगा और किस तरीके से वो फॉलो अप लिया जाएगा? साधारणतः तो G20 कोई लीगली बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. ये एक समूह है अलग अलग देशों का जो विचार विमर्श करके आम सहमति बनाते हैं कि कैसे विश्व को हमने सबने मिलकर आगे बढ़ाना है. 85% विश्व की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इन देशों के अंदर सम्मिलित है. तो एक बहुत मजबूत आवाज है.
भारत का इस वर्ष G20 का प्रेसिडेंसी मिलना हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। स्वाभाविक रूप से जो चर्चाएं होती हैं उसमें से सभी देश सीखते हैं, समझते हैं और आगे का मार्ग निर्धारित करते हैं, रास्ता बनाते हैं कि कैसे जो जो चर्चाएं हुई हैं उसमें से हम एक दूसरे के साथ मिलके इनको लागू करें। और भारत तो एक ऐसा देश है जिसमें सस्टेनेबिलिटी या एक नेचर के प्रति संवेदना या चिंता आज से नहीं पर हजारों वर्ष से रही। चाहे वो हमारे नदियां हो, चाहे वो हमारे पहाड़ हो, सभी को लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सभी को हम बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं और उसको सुरक्षित रखने में हम सब जुटे रहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हो, कार्बन का इन्फ्लुएंस कम हो विश्व में, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को और प्राथमिकता मिले। आप जानते हैं कि पेरिस में हमने तय किया था कि भारत ने ऑफर किया था कि हम अपनी पूरी जो एनर्जी कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी पावर की, इसको 40% नवीकरणीय ऊर्जा से करेंगे। हमने वो लक्ष्य 2021 में ही कर लिया। ग्रीन हाइड्रोजन हो, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करके विश्व व्यापार में, निर्यात में भेजा जाए और भारत एक प्रकार से अगर मैं कहूं समस्या नहीं समाधान का एक मार्ग बने। ये मैसेज आज पूरे दुनिया में गया है। वी आर नॉट द प्रॉब्लम, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड इंडिया टुडे इज इमर्जिंग एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन। दिस इज अ बिग चेंज एंड द वर्ल्ड टुडे रिस्पेक्ट्स एंड रिकॉग्नाइजेस दैट चेंज।